Welcome back to the channel, guys. Today is the 7th of August when I'm filming this part. This video would have been like bits and bytes from different days footage, and there are reasons behind that which I will come to you as I proceed in the vlog. Now, first things first, some 2 weeks back I posted a video on my channel which showed about the cold start problems that I'm facing even in this hot summers of Delhi. And you guys saw the video, so I posted about that cold start problem, and then there was a gap of these 2 weeks. So I posted a community post as well as to that. You guys must be wondering what exactly is what is the update and all that stuff. A lot of things happen in between in these 2 weeks regarding the problem, and that's all the drama that I'm gonna share with you guys today in this particular vlog. So make sure you watch it until the end. Now the thing is that when I faced this particular problem, I took my bike to Kirtinagar KTM, which is the Baggaling Kirtinagar KTM. People from Delhi, Ghaziabad, NCR will know this service center. They are supposedly one of the best centers. That's what I knew. But इस बार का experience मेरा बहुत ही बेकार रहा. So much बेकार, I would say, so much bad, that I personally will never visit that center ever again, and I will not recommend anyone to go there. I have been their customer from the Dominar days, then when I had the Duke 390, so they know me and I know them, all the people out there. I know them by their name, I have their numbers and everything. So with a lot of expectation I went there, and I thought that my problem will get fixed. What they did was just beating around the bush. First day when I went there, and along with me, one of my friend also came together. He owns a Adv250, which is just about a couple of months old, and he is like planning some mega trip ahead, and with that kind of trip which includes a lot of off-road, serious off-road and all that, and he's doing it solo. And if he's facing the same kind of problem, which is a cold start problem right now here in these Delhi summers, imagine what could happen there in that cold weather. मैंने उनको बोला कि भाई एक बार चले आ कीर्तिनगर में, because that's the amount of trust and faith I had in the Kirtinagar Baggaling guys. But they failed miserably this time. Both of us went there. We went in with the same problem. उसको कुछ काम था, वो अपना बाइक रख के चला गया घर वापस. I was there because I don't have another vehicle to use it as a spare vehicle. So I stayed back at the Baggaling Kirtinagar center. I followed up with them. So what they did was is they opened up this particular part on the left hand side of the bike. एक काम करते हैं, पहले आप ये वाला क्लिप देख लो. ये मैंने उसी दिन शूट किया था. Once I came out of the service center and I went to one of my favorite locations, which is भूली बतियारी की महल, behind the करोल बाग हनुमान जी मंदिर. तो आप ये वाला क्लिप देख लो, उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं. So this is where you have to open this. I mean, don't do this yourself. आपके शहर में जो भी आपका बेस्ट मैकेनिक है, KTM सर्विस सेंटर है, उनको जाके बोलो कि ST कॉइल का एडाप्टर को टाइट करना है या ऐसा कुछ. ज़्यादा डिटेल में आई वॉज नॉट अलाउड टू शूट एंड रिकॉर्ड ऑल इन्फॉर्मेशन, सो इतना ही बता सकता हूँ. बट असली टेस्ट कल सुबह होंगे. तो आज है सैटरडे 23 तारीख, तो मैं कल सुबह इसका टेस्ट करके फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि प्रॉब्लम इज फिक्स्ड और नॉट. देख लिया आप लोगों ने क्लिप. तो दिस इज व्हाट दे डिड टू फिक्स द प्रॉब्लम. आई वाज टोल्ड दैट देयर इज सम pin inside which KTM apparently makes loose by default, so they have to tighten it, because a lot of technical reasoning they gave me, which I honestly had no other options than to believe them, because I had a blind faith kind of thing with them, and इतना technical knowledge मेरे को तो नहीं है, आप लोगों को शायद हो सकता है. So I believed what they did was the right thing, and then I came back with the bike, and उस time पे bike की engine गर्म थी and everything was fine. But मैंने उनको बोल के आया कि I will be observing in the next couple of days as to what exactly is the bike's behavior, because the bike was starting up in multiple starts. That's when I will give you my verdict. So I kept on observing them, and to my surprise, the problem kept increasing. So much so, on the 5th of August, which was day before yesterday,
Yeah, day before yesterday, 5th of August. No, actually it happened on the 4th of August. 4th of August it started up in like 7th or the 8th attempt, and on the 5th of August morning it started up in the 10th attempt. मैंने डे वाइज क्लिप बना बना के टेक्नीशियंस को भेज रहे थे, बग्गालिंक वाले को, एंड आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दे केम अप विद द सॉल्यूशन. पहले आप ये वाला क्लिप देख लो. So right now this is the same day, Saturday 23rd, and it's close to 4ish hours. Let's see whether the bike now starts up properly or not. The next morning. So today is the 24th of July, the next day. So let's check. तो मैंने जब ये सब क्लिप्स भेजे, मैंने 5th ऑफ अगस्त को बहुत चिल्लाया उन लोगों के ऊपर, मतलब आई वॉज एट द टिप ऑफ माई पेशेंस. सो मैंने बोला दिस इज नॉट हैपनिंग, यू गाइज आर नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, यू गाइज आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, यू probably don't even know where the problem lies, so I don't know what exactly to do. तब उनका जो टेक्नीशियन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी बड़प्पन कह लो या जो भी है, मन तो कर रहा है नाम लेके उनके नाम पे बोलूँ, बट नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बिकॉज इट्स हिज जॉब, सो आई डोंट वांट टू हिट ऑन एनीवन्स जॉब, बट ही इज़ एन एब्सोल्यूट इररिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस केस. तो उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजा, ये वाला जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे. सो अपेरेंटली दिस इज़ द थ्रॉटल बॉडी क्लीनर लिक्विड. सो वो फ़ोटो खींच के मेरे को भेजता है, और एट द सेम टाइम ये बोलता है कि मेरे पास ये स्टॉक में नहीं है अभी, और मेरा जो लड़का ये काम करता है वो छुट्टी पे है. सो आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दैट थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए कौन सा अलग से इनको इंसान चाहिए या टेक्नीशियन चाहिए, ये तो उसको खुद ही करना आना चाहिए. तो और ऊपर से तुम फोटो भेज रहे हो, उस चीज़ का तुम फोटो भेज सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यू सेइंग दैट इट्स नॉट इन स्टॉक. डजंट मैच. LHS नॉट इक्वल टू RHS. बहुत चिल्ला उनके ऊपर, बट एट द सेम टाइम आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज आई डोंट हैव अ सोल्यूशन, एंड दीज गाइज वर जस्ट नॉट
any helpful. वो बस बोल रहे थे सर हम टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन को भेजेंगे, हम देखते हैं क्या करते हैं, डोंट वरी सर. एंड दे वर गिगलिंग ऑन द फोन, डोंट वरी सर हो जाएगा एंड ऑल दैट. सो आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी. I told this to one of my fellow friends whom you guys have seen in my previous one of my previous vlogs, and you will also see in the next travel vlog that we are doing together. And he said कि तू एक बार फरीदाबाद KTM में आ जा, मैं बात कर लेता हूँ वहाँ पे टेक्नीशियन के साथ, और फिर let's see whether the problem gets resolved or not, because I know the people out there, they're really helpful and knowledgeable. So I went there, and Faridabad, going to this Faridabad KTM center for me is like crossing 3 states: Noida or Ghaziabad, jo bhi keh no, Delhi, and then Haryana. And it's very long, and it was raining that day. The streets were all waterlogged. You will see in this the bits and bytes that I've shot en route. तो अभी मैं फाइनली घूम घाम के आ गया KTM फरीदाबाद में. देखते हैं, मैंने उनको पूरी प्रॉब्लम हिस्ट्री बता दिया और क्या क्या हुआ है अभी तक मेरे साथ, कौन कौन से सर्विस सेंटर में, वो सब भी बता दिया. अभी आगे देखते हैं क्या होता है. And they all heard about my problem, and then they showed the same liquid which apparently Kirtinagar guys told me that they don't have in stock. So they showed me the liquid and sir यही liquid है ना, हाँ यही liquid है. So what they did was first they checked is the spark plug, and they were actually surprised themselves, and they told me, which came to me as a shocker as well, that my spark plug was almost kind of in a burnt, semi-burnt stage. ये वाला clip जो आप देख रहे हो अभी, तो ये जो है ये पुराना वाला spark plug है इसका. And apparently after 7,000 kilometers KTM is supposed to change spark plug proactively, and my bike is at the moment running at 22,000 plus kilometers. So quite obviously the spark plug was not able to create the enough spark, and this cold start problem was getting triggered from there. On top of that, they cleaned the throttle body, which also made a lot of difference, because छोटे छोटे क्लिप्स मैंने वहाँ पे एक्चुअली बनाया था, because filming was not ideally allowed. So I took permission and then just shot some bits and bytes. And throttle body उन्होंने clean किया, फिर उन्होंने बाइक को almost 3 से 4 बार wash किया to bring the temperature down. ठंडा होने के बाद is the main problem that is happening, the cold start problem. So the bike temperature eventually came down to 32 degrees. बाहर उस टाइम पे टेम्परेचर दिखा रहा था 29 degrees. तो उन्होंने टेस्ट किया, they were happy. In the next few days, like 6th and 7th, yesterday and today, I rode the bike to my office, and then it was all fine. Even I checked it today morning, which was after a gap of 12 hours, and today it was raining in the morning, so the temperature was around the 26-27 degrees mark at that point in time. So it was absolutely fine. I mean, एक हिकअप लिया इसने, बाइक एक बार बंद हो गई, but that is still acceptable. I can take that, but starting in 10 attempts is not acceptable. अभी जैसे आज 5th अगस्त ही है और अभी रात के 10 बजे है. अभी एक बार नीचे जाके देखता हूँ बाइक स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है. अभी भी काफ़ी गर्म है बाइक. KTM आफ्टर ऑल बोला है तो एक ट्राई मार के देख ही लेते हैं. देखा, 1 स्टार्ट ओके.
So उसके बाद bike is holding up fine and there is no other problem. The bike is a lot more lively right now. It's peppier. Point is that एक service center from the same brand gave me such a miserable experience. So much so that I will not go myself and I will not recommend anyone else to go there. On the other hand, these people, which is the KTM Faridabad Neelam Chowk service center, they just resolve my problem, and that too not much of time did they take, 4-5 hours. कीर्ति नगर वाले तो मेरे आधा दिन खा जाते हैं जब भी जाता हूँ कोई भी काम लेके. कीर्ति नगर people what they do is they do a lot of talking rather than actually working on the issue. So बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिखाएंगे हम, हाँ सर या आप स्पेशल है, बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें करेंगे. काम के नाम पे इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है. They will just do the washing and polishing, उन पे ज़्यादा फोकस होता है ताकि ये सब दिखा के कस्टमर को लगे कि हाँ हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है. They just play with the words. But I am very happy with this Faridabad KTM center. So if anyone from KTM is watching, all praises for that center because they fixed my problem in almost half a day's time frame. And the cost of that is 981 rupees. बिल मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे. और कीर्ति नगर वाले जो भी उन्होंने गुफ अप किया, उस एक दिन के लिए उन्होंने मेरे को 720 रुपए चार्ज किया था. तो प्रॉब्लम इज नाउ फिक्स, द बाइक इज नाउ ऑल फाइन. बट समरी ऑफ द स्टोरी और टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो व्लॉग जो भी कह लो इज दैट अगर आपके बाइक में ये मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है या स्टार्टिंग प्रॉब्लम, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम कुछ भी हो, और अगर आपकी बाइक काफ़ी किलोमीटर्स चल चुकी है, so in that case the first check is spark plug, the next check would be throttle body. Actually filters को आप पहले चेक करो, उसके बाद throttle body needs a bit more time. filter में बहुत ज़्यादा blockage तो नहीं आ रहा है. जैसे गाजियाबाद में एयर फिल्टर बहुत easily clog up हो जाता है तो मेरे को frequently change करना पड़ता है. तो अगर आप ऐसे polluted जगह में रहते हो जहाँ पे ये chances है तो उसका भी एक चेक कर लो. all the possible filters and everything, उससे issue resolve हो जाता है fine. If not, then the next check would be throttle body. And make sure you're filling up petrol from the good petrol station, because वहाँ पे इंडिया है ना, हर जगह पे बहुत कुछ होता रहता है. So if you go by these particular pointers, as per my experience, there shouldn't be any problem. And if you're maintaining your bike on a periodic way, so all issues should get resolved. So that's all what I wanted to say in this particular vlog. Maybe शायद थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, but hopefully आपको आइडिया लग गया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. सब्सक्राइब करना है तो कर देना अगर आपने नहीं किया हो चैनल पे. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो वीडियो को अगर आपका कोई फेलो यूजर इस प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो. दैट्स ऑल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. कश्मीर का व्लॉग मैं देख रहा था और जिसका मैं व्लॉग देख रहा था उसी को मैंने मिल लिया फरीदाबाद KTM पे, and it's his vlogs which I thoroughly watch and I get entertained, and at the same time वो भाई उसमें दम है. तो you guys will know this person. I'm not taking the name, खुद ही देख लो क्लिप, समझ आ जाएगा. तो अभी आया था मैं अपनी बाइक की काम कराने और मिल गए हमें अंकित भाई, ड्रीम चेजर. आई वॉच हिज व्लॉग्स रेगुलरली. बहुत इंस्पायरिंग व्लॉग्स है और ये जहाँ तक पहुँच जाते हैं बाइक लेके, मैं तो कभी नहीं पहुँच पाता. नहीं, ऐसा नहीं है. बस अपने माइंड में होना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं. बाइक कैपेबल होनी चाहिए, अपने अंदर थोड़ा सा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की बात है. बस एक बार कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर तो कहीं पर भी जा सकते हैं, नो डाउट. सही है. थैंक यू अगेन, एंड देयर इज अ बिग सरप्राइज कमिंग अप ऑन हिज चैनल जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा.